हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? माय नेम इज लोकेश सोलंकी एंड वेलकम टू आवर वीडियो चैनल फिजिक्स लवर। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, होल चैप्टर इन वन वीडियो। इसमें हम बात करेंगे ऑल द कॉन्सेप्ट, ऑल द डेफिनेशंस रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज द फॉर्मूले in different cases. What is the electric potential due to a dipole? What is the electric potential due to a point charge? On any conducting sphere, inside the electric potential, outside the electric potential, how is changing? So we will discuss all these things in this video, because this video is very useful for term first examination according to CBSE. And you know that your timetable came already, so you are ready to preparation. आप सभी तैयार हैं? So my name is Lokesh Solanki and today we will discuss electric potential related to all the concepts. Okay? तो आप तैयार हैं? स्टार्ट किया जाए। चलें, हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? You know that if we have a charge and the charge is at infinity, so we have to do work against the electric field. हमें क्या करना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना होगा. So the work is done to move a charge. Work done by an external force in moving a unique positive charge from one point to the another point in an electric field. Because you know that a charge can exert electric field. It may be outward, it may be towards the charge. ये हमें पता है. So potential क्या होता है? Work done per unit charge. एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो एक्सटर्नल वर्क होगा, that is the electrostatic potential. So V is equal to W upon Q. V क्या होगा? Potential is equal to work done per unit charge. Okay, it is a scalar quantity. Potential is a scalar quantity, but you must remember it always flows from higher potential to lower potential. Potential जो होता है डिफरेंस कहाँ होता है? हायर टू लोअर में, और उसके बीच क्या फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है. इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. इट्स ऐसा यूनिट इज जूल पर कॉलम. इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल पर कॉलम होती है. एंड इट इज आल्सो नोन एज द वोल्ट. पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं? वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं. इट्स अ डायमेंशनल फार्मूला इज mL2T-3A-1. यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला. आपको ये ध्यान होना चाहिए. ये सभी कॉन्सेप्ट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है? Because if you know the formula and definition in each and everything, you can easily calculate the question. आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. आपके पास एक चार्ज है एंड यू आर फाइंडिंग एट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P. सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम द r डिस्टेंस? तो ये होती है V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R. 1/4πε0 Q upon R. That is the electric potential due to a point charge. When there are some of the charges is given to us in a system of charges, बहुत सारे चार्ज दे दिया है and we want to calculate a potential at a particular charge. उस कंडीशन में क्या होगा? So it is the vector sum. It is the sum of all the potential due to the another charge. V is equal to 1/4πε0 summation Qi upon Qr. What summation represent? Summation यहाँ पर क्या बता रहा है? Summation represent करता है कि जो चार्ज है, ये सभी चार्जेस with their respective distances we can easily add. हम इसे क्या कर सकते हैं? add कर सकते हैं. And we have to remember a very most point. We will take a charge in a potential with their sign. हमें क्या करना होगा? पोटेंशियल में चार्ज को उसके साइन के साथ लेना होगा. Whatever the sign of the charge, you will take with the charge.
ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक हो गया. देन द पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट एनी एंगल, मीन्स हम क्या कह रहे हैं कि जो डायपोल है वो क्या बना रहा है, कुछ एंगल बना रहा है. कहाँ से? पॉइंट पी से. मतलब दिस इज आपका डायपोल है, ये आपका डायपोल है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, एंड दिस इज अ पॉइंट पी, इट इज मेकिंग एंगल थीटा फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल, from the midpoint of the dipole. In this condition, the electric potential is equal to P cos theta upon 4 pi epsilon naught r square. It is equal to P cos theta upon 4 pi epsilon naught r square. So, what are you observing due to the electric potential due to a dipole? Means the potential due to the dipole is inversely proportional to square of distance. Potential due to a dipole is inversely proportional to the distance from the center of the dipole. This is a new point. When we talk about the potential at axial point, जब potential हम axial point पर बात करेंगे, in this condition the potential at axial point due to a dipole is the P upon 4 pi epsilon naught r square, because in the axial point थीटा इज इक्वल टू 0. थीटा जो एंगल होगा वो कितना होता है? 0 डिग्री होता है. ओके, तो ये आप ध्यान रखें. व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो दैट इज द इक्विलैटरल पोजीशन. ये क्या होगी? इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगी, एंड दैट इज द इक्वल टू 0. उस कंडीशन में पोटेंशियल क्या होगा? 0 के इक्वल होगा. ओके, पोटेंशियल फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r. We have given an isolated conducting sphere. We want to find electric potential at the center, yeah, inside, on the surface, outside the conducting sphere. So you must remember one point here: the potential on the surface and inside a conducting material, conducting sphere, conducting body is always same. जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल उसके अंदर भी होगा. इट्स सेंटर इज आल्सो सेम, उसके सेंटर पर भी सेम होगा. बट द आउटसाइड द पोटेंशियल इज डिफरेंट. आउटसाइड सरफेस द पोटेंशियल 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r, capital Q upon small r, where small r is a distance. स्मॉल आर इज ग्रेटर देन द कैपिटल आर. स्मॉल आर क्या होता है? कैपिटल आर से ज्यादा होता है, कैपिटल आर से बड़ा होता है. ओके, सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो दैट इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ dipole at a different point, potential on the conducting sphere, on the surface, inside the surface, outside the surface. Okay, so note down properly because this is very helpful. नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि व्हेन वी ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम एक चार्ज को इनफाइनाइट से कहाँ पर ला रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं. सो पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वर्क डन के फॉर्म में स्टोर हो जाती है. ओके, सो दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस क्या होती है? एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में, अनदर चार्ज को हम ब्रिंग कर रहे हैं. सो दैट इज इक्वल टू U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर. R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिंगल चार्ज इज इक्वल टू 0. जब पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पर्टिकुलर चार्ज की वजह से क्या होती है? 0 होती है. Means that there is no potential energy for a single charge. We can say that U is equal to 0 for one charge. एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0 होगी. When there are system of charges, then the potential energy is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught all pairs Qj Qk upon Rjk. Means जितने भी pairs बन रहे हैं, all the possible pairs between Q and Q1 and Q2, इनके भी जितने भी pairs हैं, suppose we have 3 charges 1 2 3, so what about the pairs? Q1 Q2 होगा,
Q2 Q3 होगा and Q1 Q3. There are 3 pairs. Okay, so similarly here we have all pairs. जितने भी pairs होंगे उसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी. ओके, एनर्जी डेंसिटी जो होती है, एनर्जी डेंसिटी इज द एनर्जी पर यूनिट चार्ज, सॉरी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, and it is equal to 1 upon 2 epsilon naught E square. Energy density is equal to 1 upon 2 epsilon naught E square. Whenever we are finding the potential energy in an electric field, तो उस कंडीशन में क्या होगी, potential energy in an electric field. In a particular electric field, we can say that the potential energy for a single charge, potential energy of a single charge V at r distance is charge into potential. Charge into potential. We can also define the potential energy is the product of the charge and the potential. चार्ज और पोटेंशियल के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. ओके, सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस की वजह से क्या होगी, दैट इज इक्वल टू Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 and Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught R1 2 whole cube. Q1 VR1 plus Q2 VR2 Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught R1 2 cube. Okay, that is the potential energy. Potential energy of a dipole in an external electric field. When we are bringing a dipole in a uniform electric field, so the potential energy is stored in that particular dipole, that is equal to minus P dot E. Minus P dot E, it means हम इसे कह सकते हैं U is equal to minus PE cos theta. Minus PE cos theta, because dot product is equal to cos theta. P dot E means PE cos theta. That is the relation between the potential energy and the distance. Sorry, potential and distance का ये relation है. It shows this is the potential due to a charge. Single potential at any point due to a charge ये होता है 1 upon 4 pi q 4 pi epsilon naught q upon r. So this is the graph. ये slope क्या represent कर रहा है, potential versus distance graph. And this is the potential due to a dipole graph. ये potential का dipole के through graph है, potential distance graph due to a dipole. So it is equal to V is directly proportional to 1 upon r square. So that is all about the potential energy. The potential energy जो होती है, it is stored in the form of work done. Remember always. Okay. So note down in your notebook properly. So the next is the relation between the electric field and the potential. So you know that the electric field and the potential both are related to each other, because if you move in the direction of electric field, then potential decreases. उस कंडीशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है, कम होता है. सो व्हाट इज द रिलेशन? सो द रिलेशन इज E is equal to minus dV upon dr. E is equal to minus dV upon dr. It means it is also known as the potential gradient. इसे हम क्या कहते हैं, potential gradient. Means the potential is changing with respect to distance. जब पोटेंशियल डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, चेंज होता है, डिक्रीज होता है, इट शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड वी विल गेट, हमें यहाँ से क्या मिलता है, एक अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यू नो दैट इज द न्यूटन पर कूलम, जो कि होती है न्यूटन पर कूलम, फोर्स पर यूनिट चार्ज. एंड अनदर यूनिट इज वोल्ट पर मीटर. वोल्ट पर मीटर.
Negative sign indicate V is decreases in the direction of electric field. Means if the charge is moving in the direction of electric field, then the potential is decreases. उस कंडीशन में क्या होगा? पोटेंशियल डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, बिकॉज माइनस dV अपॉन dr. Electric field rate of change of potential with distance is potential gradient. Electric field rate of change of potential with distance dV upon dr. r is a distance. इसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं. ओके. इन द स्पेस अराउंड द चार्ज, हम माने कि एक चार्ज है हमारे पास और उसके आसपास क्या है? स्पेस है, फ्री स्पेस. सो वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ 3 डायमेंशन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 3D में होगी, 3 डायमेंशन होगी. सो E is equal to EXIK plus EYJK plus EJKK. We can easily find the electric field in x-axis, that is Ex minus del V upon del X, Ey minus del V upon del Y is Z minus del V upon del Z. Okay, and this is known as a potential gradient in x-axis, y-axis and z-axis. If the electric field is equal to 0, it means the potential is not equal to 0. हम ये नहीं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल 0 होगा. इट मे बी 0 और मे नॉट बी 0. इट मे बी 0 और may not be 0 according to situation. Okay, that is vice versa is there. If the potential is equal to 0, then it cannot be possibilities electric field is always 0. Electric field may be 0, may not be 0. That is always remember. ठीक है. Then our next term came, which is equipotential surfaces. It is very important topic. इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है कि जहां पर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है. द पोटेंशियल इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द सरफेस इज नोन एज द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है. किसके? इक्विपोटेंशियल सरफेस के. ऑलवेज रिमेंबर, they never intersect each other. Though electric equipotential surfaces, two electric potential surfaces cannot intersect each other. ठीक है. Work done on any equipotential surface is equal to 0. If we are moving a charge from one equipotential surface from one point to the another point, एक equipotential surface के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम क्या ले जा रहे हैं? चार्ज को ले जा रहे हैं. उस कंडीशन में वर्क डन 0 होगा, बिकॉज पोटेंशियल इज सेम, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस. फॉर पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल. पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है? स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. ओके. एंड फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, electric field equipotential surfaces are plane perpendicular to the electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगी? प्लेन परपेंडिकुलर होगी. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इट्स रिलेटेड टॉपिक. ओके, सो इफ यू like this video, then share and subscribe to our channel Physics Lover. Okay, thank you for watching. पढ़ते रहें और बढ़ते रहें. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन. ठीक है.